German tanks on the borders of Russia. Why does that ring a distant bell, in fact, an alarm bell? The last time that happened may have been 80 years ago, but the so-called Great Patriotic War still resonates loudly in the collective Russian consciousness, partly as a consequence of relentless state propaganda, but also because for some survivors it's still a living memory. It's likely the German government's reluctance to supply Ukraine with Leopard 2 tanks was in part an oblique acknowledgement of that horrible history. Germany invaded Russia twice in the 20th century. It's understandable why it might not wish to be seen as the driving force behind a third attempt in the 21st century. The government of Chancellor Olaf Scholz, which has already been supplying plenty of military aid to Ukraine, much of it surreptitiously, finally caved in last week after relentless bullying by its NATO allies. It also does not want to be singled out as a stumbling block in Western assistance for Kiev's resistance. Last week, it agreed to supply 14 of its coveted Leopards, in lockstep with allies such as Poland, the UK, and US. America's M1 Abrams tanks were high on Volodymyr Zelensky's Christmas wish list when the Ukrainian president visited Washington in December. Santa was happy to bounce young Volodya on his knee, but prepared to provide him only the smaller war toys, armored vehicles, missile launchers and defense systems, and the like. Joe Biden relented last week. 31 Abrams tanks will wind their way to the war zone at some point. It could take months, if not years, the New York Times quoted military sources as saying. Can more Western weapons save Ukraine? The Leopards could reach Ukraine much quicker, certainly in time for the commemoration of the 80th anniversary of the Battle of Kursk in western Russia in July-August 1943, which effectively turned the tide against the Soviet Union's Nazi invaders. It is remembered as the largest tank battle in history. 6,000 tanks, 4,000 aircraft and 2 million troops were involved, according to Encyclopaedia Britannica. The difference this time around is that Russia is the invader. Notwithstanding serial NATO provocations over the previous 3 decades, the hostilities launched this month last year were Vladimir Putin's choice. It would have qualified as an extraordinarily dumb choice even if his initial assumptions of a cakewalk to Kiev had proved to be realistic. They turned out instead to be absurdly inflated. Russian military adventurism has come a cropper on almost every front, and frequent changes of command have not helped. Raw recruits thrust onto front lines with little training can hardly be blamed for their poor performance, and too many of them will not live to tell their tales. Both sides are estimated to have lost more than 100,000 military personnel each. And for what? The Ukrainians can at least credibly claim to be defending their homeland. The Russians lack a viable excuse for their enforced sacrifice. The Western attitude towards the conflagration of which it is incontrovertibly a part is broadly divided between those who consider the steadily increasing weaponization of Ukraine to be a means of pushing Putin to the negotiating table, and an increasing number of others who envisage a decisive Russian defeat. But what exactly does a Russian defeat look like? Would driving Russian forces out of the territories occupied since last February suffice? Or would it involve a reversion to the pre-2014 status quo ante? Both aims could be justified, the latter on the basis of the 1991 agreement between Russia, Ukraine, and Belarus that demolished the Soviet Union. There could be ambitions beyond that, though, which could feed into Putin's claims of threats to the Russian Federation's integrity. Ultimately, though, Putin himself is the biggest threat to Russia. Putin must go. And the impetus for that needs to come from within Russia, not from Washington, Brussels, or Berlin. His reign since the turn of the century has been disastrous in many respects, but the February 2022 invasion of Ukraine takes the poison cake. A Kremlin without Putin could potentially benefit both Russia and Ukraine. But there is no clear indication that such a development is imminent, and it is far from clear who will take over if, by hook or by crook, he departs. Among the possible successors is Yevgeny Prigozhin, whose brutal Wagner group of mercenaries has militarily been more effective than the regular Russian army. That would truly be disastrous, but the alternatives too provide little cause for hope.
Russia's disastrous performance in World War I triggered the revolutions of 1917. It could do with a repeat. But the lethal arming of Ukraine, and broader Western hyperbole, such as The Guardian's headline "Terror on New Year's Eve, huge Russian missile attack kills one in Ukraine," doesn't really help. Published in Dawn, February 1, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. रूस की सरहदों पर जर्मन टैंक। ये घंटी दौर की घंटी क्यों बजती है? दरहकीकत खतरे की घंटी। आखिरी बार जो वाकया 80 साल पहले पेश आया था, लेकिन नाम निहाद अजीम मुहिब वतन जंग अब भी इज्तिमाई रूसी शऊर में जोर शोर से गूंज रही है, जुज़वी तौर पर अनथक रियासती प्रोपेगेंडे के नतीजे में, बल्कि इस वजह से भी कि कुछ जिंदा बच जाने वालों के लिए ये अब भी एक जिंदा याद है। ये मुमकिन है कि जर्मन हुकूमत की जानिब से यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक फराहम करने में हिचकिचाहट इस खौफनाक तारीख का बेवास्ता एतराफ़ था। 20वीं सदी में जर्मनी ने 2 बार रूस पर हमला किया। ये बात समझ में आती है कि उसे 21वीं सदी में तीसरी कोशिश के पीछे मुहर्रिक के तौर पर क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। चांसलर ओलाफ शूल्ज़ की हुकूमत, जो पहले ही यूक्रेन को काफ़ी फौजी इमदाद फराहम कर रही है, जिसमें से ज़्यादातर खुफिया तौर पर है, बिलाखिर गुज़िश्ता हफ्ते नेटो इत्तेहादियों की जानिब से मुसलसल गुंडागर्दी के बाद गिर गए। ये भी नहीं चाहता कि उसे कैफ की मुज़ाहमत के लिए मगरिबी इमदाद में रुकावट के तौर पर पेश किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते इसने पोलैंड, बरतानिया और अमरीका जैसे इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने 14 पसंदीदा चीते फराहम करने पर इत्तेफाक किया था। दिसंबर में जब यूक्रेन के सदर ने वाशिंगटन का दौरा किया तो अमेरिका के M1 अब्रामिस टैंक वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की क्रिसमस की ख्वाहिशात की फहरिस्त में सरे फहरिस्त थे। सांता नौजवान विलविदिया को घुटने पर बिठाकर खुश था, लेकिन उसे सिर्फ छोटे जंगी खिलौने फराहम करने के लिए तैयार था, बख्तर बंद गाड़ियां, मिसाइल लॉन्चर और दिफाई निज़ाम, और इसी तरह के। जो बाइडेन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि अब्रामिस के 31 टैंक किसी वक्त जंग-ज़दा इलाके की जानिब रवाना होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फौजी ज़राए के हवाले से बताया है कि इसमें बरसों नहीं तो महीनों का वक्त लग सकता है। क्या मज़ीद मगरिबी हथियार यूक्रेन को बचा सकते हैं? चीते बहुत तेज़ी से यूक्रेन पहुंच सकते थे, यकीनी तौर पर जुलाई अगस्त 1943 में मगरिबी रूस में करसक की जंग की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए, जिसने सोवियत यूनियन के नाजी हमला आवरों के खिलाफ मुअस्सर तौर पर लहर का रुख मोड़ दिया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इसे तारीख की सबसे बड़ी टैंक जंग के तौर पर याद किया जाता है। 6,000 टैंक, 4,000 हवाई जहाज और 2,000 फौजी शामिल थे। इस बार फर्क यह है कि रूस हमला आवर है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान नेटो की इश्तिआल अंगेजियों के बावजूद गुज़िश्ता साल इस माह शुरू की जाने वाली दुश्मनी व्लादिमीर पुतिन का इंतखाब था। ये एक गैर मामूली अहमकाना इंतखाब के तौर पर अहल होता, भले ही कैफ को केक वॉक करने के बारे में उसके इब्तिदाई मफरूज़े हकीकत पसंदाना साबित हुए हो। इसके बजाय उन्हें मुज़हका खेज़ अंदाज में बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। रूसी फौजी मुहिम जोई तकरीबन हर महाज पर नाकाम रही है और कमान में बार बार तब्दीलियों से कोई मदद नहीं मिली है। कम तरबियत के साथ फ्रंट लाइन पर उतारे जाने वाले इलाके भर्तियों को शायद ही उनकी खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और इनमें से बहुत से लोग अपनी कहानियां सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दोनों फरीकों ने 1 लाख से जायद फौजी अहलकारों को खो दिया है। और किस लिए? यूक्रेन के बाशिंदे कम अज कम अपने वतन का दिफा करने का दावा तो कर सकते हैं। रूसियों के पास अपनी जबरी कुर्बानी के लिए कोई काबिल अमल उज़्र नहीं है। यूक्रेन के बढ़ते हुए हथियारों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का जरिया समझने वालों और रूस की फैसला कुन शिकस्त का तसव्वुर करने वालों की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान मगरबी रवैये में वसी पैमाने पर तकसीम है। लेकिन रूस की शिकस्त दरअसल कैसी नजर आती है? क्या रूसी अफवाज को गुज़िश्ता फरवरी से मकबूजा इलाकों से बाहर निकालना काफ़ी होगा? इसमें 2014 अशारिया से पहले की सूरत हाल से इनहिराफ शामिल होगा। रूस
यूक्रेन और बेलारूस के दरमियान 1991 के मुआहदे की बुनियाद पर दोनों मकासद को जायज़ ठहराया जा सकता है जिसने सोवियत यूनियन को तबाह कर दिया था। ताहम इससे आगे भी कुछ अज़ाइम हो सकते हैं जो रूसी फेडरेशन की सालमियत को लाहिक खतरात के पुतिन के दावों को तक़वियत दे सकते हैं। ताहम आखिरकार पुतिन खुद रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुतिन को जाना चाहिए और उसके लिए तहरीक रूस के अंदर से आने की ज़रूरत है, न कि वाशिंगटन, ब्रसेल्स या बर्लिन से। सदी के आगाज से अब तक उनका दौर हुकूमत कई लिहाज से तबाहकुन रहा है, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले ने जहर केक ले लिया। पुतिन के बगैर क्रेमलिन मुमकिना तौर पर रूस और यूक्रेन दोनों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इस बात का कोई वाज़ेह इशारा नहीं है कि इस तरह की पेशरफ्त होने वाली है, और ये वाज़ेह नहीं है कि अगर वो धोखाधड़ी के ज़रिए इक़्तिदार छोड़ देता है तो कौन इक़्तिदार संभालेगा। मुमकिना जानशीनों में से एक ओगे परयुगविजन है, जिसका सफ़ाक वेगनर किराए के फ़ौजियों का ग्रुप आम रूसी फ़ौज के मुकाबले में फ़ौजी तौर पर ज़्यादा मुअस्सर रहा है। ये वाकई तबाहकुन होगा, लेकिन मुतबादिल भी उम्मीद की बहुत कम वजह फराहम करते हैं। पहली जंग अजीम में रूस की तबाहकुन कारकर्दगी ने 1917 के इनकलाबात को जन्म दिया। ये दोबारा होने के साथ हो सकता है, लेकिन यूक्रेन को हथियारों से लैस करने और वसी पैमाने पर मगरबी ताकतों की जानिब से की जाने वाली मुहिम, जैसा कि दी गार्डियन की शाह सुर्खी नए साल के मौका पर दहशतगर्दी यूक्रेन में रूस के बड़े मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक से कोई मदद नहीं मिलती। अखज़ शदा बतारीख 1 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.